So hello friends, in previous lecture we discussed about the sympathomimetics. Now the drugs sympatholytics. What are the sympatholytics drugs? The sympatholytics are the drugs which produces the opposite effect to the sympathetic system, known as the sympatholytics. Or so sympatholytics have the opposite effect of adrenergic agents, also known as the adrenergic antagonist or adrenergic ब्लॉकिंग एजेंट्स. सो जो सिंपैथेटिक सिस्टम का जो इफेक्ट रहता है, जो सिंपैथोमाइमेटिक का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को क्या करते हैं? ड्रग्स ब्लॉक करते हैं. वी नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स, देयर लोकेशन एंड द मैकेनिज्म, है ना. सो सिंथेसिस रिलीज आल्सो वी डिस्कस्ड ऑफ एड्रेनालिन और एड्रेनालिन. So sympatholytics can be classified depending on the type of adrenergic receptor they block. So alpha 1 blockers, alpha 2 blockers, beta 1, beta 2 and beta 3 receptor blockers. So this is the classification of adrenergic receptor antagonist or the sympatholytics, या फिर उसे कहते हैं एंटी एड्रेनर्जिक. सो अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. सो दस आर द नॉन सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव. दस आर द नॉन सिलेक्टिव, फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलामाइन. अल्फा 1 सिलेक्टिव, दस आर द प्राजोसिन, टेराजोसिन. दस आर द अल्फा 1 selective. Those are the alpha 2 selective, yohimbine. Those are the non-selective for the beta receptor blockers, है ना. First generation, second generation, third generation non-selective, beta 1 selective. Those are the examples of the drugs, है ना. Pindolol, nadolol, sotalol. Those are the S-butol, atenolol, है ना. ये important drug है ना, जो उसका antagonist है, adrenaline वगैरह है ना, propranolol वगैरह drugs का. Those are the non-selective for beta 1 selective. Alpha blockers important drug is the phenoxybenzamine, which blocks the alpha 1 and alpha 2 by linking the covalently. Non-selective block of alpha 1 and alpha 2. Reversible or irreversible blockers हैं. So new receptors are made. What is the effect on CVS? Vasodilation, arterial and venous blood pressure down करते हैं. So magnitude depends on the sympathetic activity at that time. So postural hypotension हो सकता है. So baroreflex reflex is also present. Tends to oppose the fall by increase in the heart rate and cardiac output. So other effect, decrease in contraction of trigone muscle जो आपका urinary bladder है ना, and sphincter in blood vessels. So urine flow बढ़ा देगा. Increase in insulin secretion from islets of Langerhans causes the meiosis, nasal stuffiness होगा. Decreases the adrenergic sweating. Alpha 1 blocker, what are the clinical uses? Reduces the blood pressure. तो कहाँ यूज होता है ये? hypertensive emergencies, long term treatment, pheochromocytoma, vasodilation, peripheral vascular insufficiency, improve urine flow, है ना, benign prostatic hyperplasia. Alpha 1 blockers का adverse effects क्या है? Those are the adverse effect: postural hypotension, salt and water retention, nasal stuffiness, meiosis, failure of ejaculation. The ergot alkaloids, ergotamine, है ना, partial agonist and blocking property. Also affect other receptors, है ना, 5-hydroxy receptor के ऊपर एक्ट करता है. माइग्रेन में इसका ज्यादा यूज होता है ergotamine, acute attack of migraine. Then phenoxybenzamine, covalent binding ये डिस्कस की हमने. क्लिनिकल यूजेस है ना, pheochromocytoma, tachycardia. Phentolamine, those are the clinical uses of phentolamine. Then tolazolin, phentolamine की जैसी है. Alpha 1 selective agents है ना, prazosin and terazocin. Those are the effective in management of hypertension. याद रखो, antihypertensive ही है, prazosin, terazocin. Both are extensively metabolized by the liver. Thus are the adverse effect of these two drugs. Tamsulosin, selective alpha 1 antagonist. The clinical uses of alpha 2 blocker. Those are the clinical uses: pheochromocytoma, hypertensive emergencies, vascular diseases, local vasoconstrictor, urinary obstruction. Then adrenergic blockers, antagonists, sympatholytics block alpha 2, alpha and beta receptor sites, uses cardiac arrhythmias, angina, bronchospasms, tachycardia, wheezing. Beta blockers, competitive agonist, propranolol, S-butolol. Those are the effect of S-butolol, antihypertensive, anti-angina and bronchoconstrictor. Atenolol, important drug है, sympatholytic, beta 1 adrenergic antagonist, antihypertensive, antiarrhythmic, anti-anginal, bronchoconstrictor. Metoxolol, antihypertensive, glaucoma mediator, medication. Carvedilol, treatment of heart failure.
metoprolol, bronchoconstrictor, metoprolol, antihypertensive, bronchoconstrictor, nadolol, antihypertensive, phenbuterol, sympatholytic beta-adrenergic antagonist, antihypertensive. So generally those drugs are used as a those beta blockers and beta receptor antagonists, they are generally used in hypertension. So the beta blockers by blocking the beta receptor reduces the stroke volume and heart rate. So used in hypertension. They are also used in angina, cardiac arrhythmias. Beta blocker reduces the cardiac automaticity and increases the refractive period. Therefore they are used in the cardiac arrhythmias. मायोकार्डियल इंफेक्शन में यूज करते हैं उसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में यूज किया जाता है. एंजाइटी डिसऑर्डर्स है ना, बीटा ब्लॉकर्स हैव नो इफेक्ट ऑन एंजाइटी डिसऑर्डर डायरेक्टली, बट दस एजेंट रिड्यूसेस द पाल्पिटेशन एंड ट्रिमर्स एसोसिएटेड विद द एंजाइटी. सो देयरफॉर बीटा ब्लॉकर्स आर गिवन. माइग्रेन में यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर्स फॉर प्रोफेबल एक्सिस ऑफ माइग्रेन एट द इफेक्ट मेडिएटेड थ्रू द ब्लड वेसल. नॉन सेलेक्टिव एजेंट्स आर प्रेफर्ड इन दिस केस माइग्रेन. ग्लाउकोमा के अंदर यूज करते हैं टाइमोलॉल और बेटोक्सोलॉल, रिड्यूसेस द इंट्राऑक्यूलर टेंशन, है ना. So those are the uses of beta blockers. Alpha receptor blockers are also used in the hypertension, है ना. Second line drugs in the management of hypertension in combination with the first line agents, है ना. Shock में यूज करते हैं, vasoconstriction in shock is reversed by these agents, alpha blockers से. Raynaud's disease में यूज करते हैं in frostbite and benign prostatic hypertrophy में यूज करते हैं. and scorpion bite, है ना, बिच्छू काटता है. स्कॉर्पियन बाइट के अंदर क्या करते हैं, अल्फा ब्लॉकर counteract the sympathetic overactivity. So it is all about your sympatholytics. Let's go through it, memorize the drugs and their pharmacological actions and the indications of the drugs.